Bismillahirrahmanirrahim. Well, students, today is the 15th lecture of the series for this term. Today we are going to discuss how to measure current, voltage and resistance. आज का टॉपिक है कि आप किसी बिजली की तार में से अगर करंट फ्लो कर रही है तो उसको आप मेजर कैसे कर सकते हैं, और इसी तरह से हाउ कैन यू मेजर व्हाट इज़ द वोल्टेज, कि उसमें कितनी वोल्टेज है और रेजिस्टेंस कितनी उसके अंदर है. सो इसके लिए दे आर डिफरेंट मीटर्स या इंस्ट्रूमेंट्स और यू कैन से सम डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू मेजर. करंट को मेजर करने के लिए हम एम्पेयर मीटर इस्तेमाल करते हैं. What it is, the full word is ampere meter, but चूंकि एम्पेयर मीटर का बड़ा लफ्ज़ है इसलिए इसको शॉर्ट कर दिया गया ammeter. So ammeter is used to measure current. What is an ammeter? It is a device, ये एक आला है, to measure amount of current in an electric circuit. किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है. So करंट को फ्लो करने के लिए जो है डिवाइस यूज होती है, दैट इज नोन एज एमीटर. एंड यू शुड नाउ बी एबल टू आंसर व्हाट इज करंट. करंट किसको कहते हैं ये हमने पहले पढ़ लिया हुआ है. करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड व्हाट इज अ सर्किट. सर्किट कोई भी क्लोज पाथ हो जिसमें कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को लगाया गया होता है और एक सोर्स ऑफ बैटरी कनेक्टेड है उसके साथ करंट देने के लिए, एंड इट इज अ क्लोज लूप. So ammeter is an instrument, or it is a device, or it is a meter to measure current which is flowing in a circuit. और ammeter को हमेशा आप सर्किट में सीरीज में लगाते हैं. ammeter is connected in series, यानी सीरीज सर्किट क्या होता है, वो सर्किट जिसमें एक के बाद दूसरी कंपोनेंट्स को one after the other the components are put in this circuit to form a closed loop. So ammeter को हम लगाते हैं सीरीज के अंदर so that full current passes through, ताकि वो सीरीज सर्किट आपने देखा है कि वो फुल करंट पास होती है किसी भी सर्किट में से. और चूँकि हम चाहते हैं कि फुल करंट को मेजर करना है, वी वांट दैट ऑल करंट शुड पास थ्रू इट, देयरफॉर इट इज कनेक्टेड इन सीरीज. एंड एमीटर डज नॉट चेंज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट. इसकी खूबी ये भी है क्योंकि इसके बहुत कम रेजिस्टेंस होती है, इट इज़ वेरी लो रेजिस्टेंस. तो ये जिस सर्किट में लगाते हैं उसको मेजर करने के लिए कितनी करंट फ्लो कर रही है, ये उसकी वैल्यू ऑफ करंट को चेंज नहीं करते because it has very low resistance. So how do you measure current in a circuit? Current in a circuit is measured by an instrument or a device or a meter which is known as ammeter. ammeter की कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको सीरीज में लगाते हैं. और ammeter की रेजिस्टेंस कितनी होती है, बहुत लो रेजिस्टेंस होती है. इसके बारे में you should be knowing at least these three things that we have talked about. It is a device to measure current. 2, it is connected in series. 3, it does not change the amount of current. ये तीन बातें कम से कम आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए. Now what is a voltmeter? A voltmeter is also a device. जैसा इसका नाम है वैसा काम है. इसका नाम था एम्पेयर मीटर, तो ये इसको हम शॉर्ट एमीटर कहते थे, करंट मेजर करते थे. इसका नाम है वोल्टमीटर, तो ये वोल्टेज मेजर करता है. So what is a voltmeter? It is a device or an instrument to measure the voltage or potential difference in a circuit. So किसी भी सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितनी उसमें वोल्टेज है, उसको मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर इस्तेमाल करते हैं. और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं. आपने देखा कि सीरीज सर्किट में हम लगाते हैं एमीटर को, लेकिन हम इसको जो है वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं. इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. करंट डज नॉट फ्लो थ्रू इट बिकॉज इट हैज़ अ वेरी हाई रेजिस्टेंस. वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, तो जब ये क्रॉस लगाते हैं तो करंट इसमें से फ्लो नहीं होती क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है. किसी भी सर्किट में अगर बहुत हाई रेजिस्टेंस होगी तो वो नेचुरली इलेक्ट्रॉन्स को नहीं गुजरने देगी. सो वोल्ट एमीटर connected in series. Ammeter, it is used for measure current.
Voltmeter, it is used to measure potential difference of voltage. It is connected in parallel. इसके मुखालिफ इसको मुतवाज़ी सर्किट में लगाया जाता है और इसकी रेजिस्टेंस हाई होती है, उसकी रेजिस्टेंस लो होती है। ये बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, नाउ वी कम टू अनदर डिवाइस विच इज़ नोन एज अ मल्टीमीटर। ऊपर हमने कहा था ना कि हम कैसे मेजर करते हैं ये करंट को, वोल्टेज को, रेजिस्टेंस को। तो एक इंस्ट्रूमेंट जो है जो कि मेजर जिसमें ये रेजिस्टेंस भी मेजर होती है उसका नाम है मल्टीमीटर। मल्टी का मतलब होता है बेशुमार और मीटर मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस जो मेजर करता हो। सो व्हाट इज़ अ मल्टीमीटर? इट इज़ अ मल्टीमीटर कैन मेजर रेजिस्टेंस। इट इज़ अ डिवाइस दैट कैन मेजर रेजिस्टेंस। ये किसी भी सर्किट की कितनी मुज़ाहमत है उसको भी मेजर कर लेता है, वोल्टेज को भी मेजर कर लेता है और स्मॉल अमाउंट्स ऑफ करंट्स को भी कर लेते हैं। सिंस ये जो है एम्पियर भी मेजर करता है, वोल्टेज भी मेजर करता है और ओम्स भी। ओम आपको पता है इज द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसको ओम कहते हैं। सो इसलिए इस लिहाज से इसको एवोमीटर कहते हैं, यानी कि एम्पियर, वोल्ट और ओम मीटर्स। नाउ दिस वाज रिगार्डिंग हाउ डू यू मेजर करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। तो किसी भी सर्किट में जब आपने करंट मेजर करनी होती है तो यू यूज़ एन इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है एमीटर। एमीटर आपको बतलाता है कितनी करंट किसी सर्किट में फ्लो कर रहे हैं। दूसरी चीज़ इसमें जो लिखने वाली है, एमीटर को सीरीज सर्किट में लगाया जाता है, यानी कि साइड बाय साइड कंपोनेंट्स के साथ। नंबर 3, एमीटर की लो रेजिस्टेंस होती है और इसलिए ये करंट नहीं लेता। नेक्स्ट इज वोल्टमीटर। व्हाट इज़ अ वोल्टमीटर? वोल्टमीटर मेजर करता है वोल्टेज एंड इट इज़ यूज्ड इन पैरेलल इन द सर्किट एंड इट हैज़ अ हाई रेजिस्टेंस। Then comes the third thing, multimeter. What is a multimeter? It is a device which is used to measure current, voltage and resistance. Resistance को measure करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसे हम ओम कहते हैं। जैसे कि आपने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ओम्स लॉ क्या होता है। वो ओम्स लॉ, वो ओम उसी के नाम पे रेजिस्टेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं ओम, उसका यूनिट है ओम। सो मल्टीमीटर इज इन शॉर्ट ऑल्सो नोन एज एवोमीटर। एवो मीन्स एम्पियर, वोल्टेज, ओम्स को मेजर करने वाला आला। Now we come to the next topic, which is 11.4.1. This is regarding electrical power. कि electrical power क्या होती है? What is electrical power? क्योंकि आप बिजली को फ्लो करते देख तो सकते नहीं है, लेकिन वो आपके लिए काम करती है। उसमें इलेक्ट्रिक मोटर को चला देती है। इलेक्ट्रिक मोटर पानी को तीसरी मंजिल पर, 10वीं मंजिल पर, 50वीं मंजिल पर पहुंचा देते हैं। इट कैन डू वर्क फॉर यू। इमेजिन अगर आपको खुद इतनी ऊपर 103 मंजिलों पर पानी लेके जाना पड़े तो कितना मुश्किल होगा। बट इलेक्ट्रिक मोटर कैन लिफ्ट इट टू सच हाई लेवल्स ऑल्सो। सो उसमें इलेक्ट्रिकल पावर जो है उसकी वो कैसे, क्या चीज़ है वो। ओके, नाउ इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? इट इज द रेट, ये इज द रेट एट विच अ डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू एन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट एट विच अ डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू एन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मसलन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक फॉर्म है कन्वर्ट करने की कि आप इलेक्ट्रिक मोटर में इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ऊपर तक पहुंचाते हैं। एक आपके पास फॉर्म इलेक्ट्रिक पंखा है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होती है और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है जिससे आपको हवा मिलती है इसके ब्लेड्स के घूमने से। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हो एंड यू कैन स्विच ऑन द लाइट्स एंड द लाइट्स विल गिव यू लाइट। सो द कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। सो हाउ डू यू डिफाइन इलेक्ट्रिकल पावर? इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट at which a device converts electrical power or electrical energy into another form of energy. Okay, इसका यूनिट है वॉट। क्या यूनिट है? वॉट। इसलिए जब बल्ब खरीदते हैं लगाने के लिए उस पर लिखा होता है कि ये
10 वॉट्स का है या 20 वॉट्स का या 50 वॉट का। ये क्या शो करता है कि किस रेट पे वो बिजली इस्तेमाल की। रेट का मतलब है कितनी टाइम के अंदर कितना वो काम करती है 1 सेकंड के अंदर। दैट इज द मीनिंग ऑफ रेट। It's the rate at which a device converts electrical energy into another form of energy. और तमाम electrical devices and all of them such as fan converts electrical energy into mechanical energy. Juicer blenders जो आपके this converts electrical energy into mechanical energy, and the blades they help you to make milkshakes etc. Computers they also use electrical energy, and they convert these into other forms of energy. Similarly, there are many other forms of energy which are electrical devices used. But what is a watt? What is the unit of electrical power? और इसकी definition क्या है? The rate at which electrical energy is converted into another form of energy. इसको कहते हैं watt. But this watt, is a small unit. So we used a bigger unit which is known as kilowatt hour. और किलो का लफ्ज़ जहाँ कहीं भी आपके जो है ना निगाहों के सामने से गुजरे, किलो का मतलब हमेशा होता है 1000. सो किलोवाट का मतलब है 1000 वाट्स, एंड किलोवाट आवर का मतलब क्या है कि अगर द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी बीइंग यूज्ड अप इज 1000 वाट्स 1 घंटे में, अगर कोई डिवाइस 1 घंटे में it uses 1000 watts, then it is known as 1 kilowatt hour. So what is 1 kilowatt hour? It is also a unit of electrical power. Watt is a unit of electrical power. Kilowatt hour is also a unit of electrical power, and it is the amount of energy used up when an electrical appliance or 1000 watts works for 1 hour. So अगर आपके पास 1000 watts का कोई बल्ब है और वो 1 घंटे लगातार चलता है, तो then the amount of electrical energy used is 1 kilowatt hour. और कोई अगर पंखा है, ये मिसाल के तौर पर ये 1000 वाट्स खाता है, 1000 वाट्स का है, तो 1 घंटा चलता रहिए, तो 1 घंटे में जितनी इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ की, दैट इज़ नोन एज 1 किलोवाट आवर, एंड इट इज़ अ कमर्शियल यूनिट. आपको जो इलेक्ट्रिकल का बिजली का मीटर बिल मिलता है घरों में, वो उसमें यूनिट्स लिखे होते हैं. एवरी यूनिट मीन्स 1000 वाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बीइंग यूज्ड फॉर 1 आवर. नाउ just a tidbit, which talks about the electrical eel जो है, ये एक समुंदर का इलेक्ट्रिकल ईल, एक समुद्री जो है ना, ये इट्स अ काइंड ऑफ ए फिश जो कि जिसको हम इलेक्ट्रिकल ईल कहते हैं. ये 600 वोल्ट बिजली पैदा कर लेती है. अल्लाह पाक ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ गिवन सम डिफेंस मैकेनिज्म टू ऑल लिविंग थिंग्स. हर जिंदा चीज़ को कोई ना कोई उसको अपना दिफा करने का सिस्टम दिया हुआ रब्बुल इज़्ज़त ने. तो बाज़ आपने देखा है, बिल्ली हो गई या कुत्ते हो गए, ये चक मारते हैं, ये इनका डिफेंस मैकेनिज्म बचाने का. दिस इलेक्ट्रिकल ईल, दिस इलेक्ट्रिक ईल, ये भी एक मछली है जो लंबी सी होती है, और ये जो है ये बिजली पैदा करती है अपने अंदर केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए, और ये 600 वोल्ट तक बिजली पैदा करती है. जब इसके नज़दीक कोई आता है इसको नुकसान देने के लिए, तो उसको ये करंट मारती है, शॉक देती है. So just to tell you that electrical eel can create up to 600 volts of electricity. And then there is another quiz about in your book which talks about this thing. When electric current flows through a tungsten filament, ये जो बल्ब होते थे, एक तो आजकल है ना जो कि LCD बल्ब लग रहे होते हैं, LED बल्ब लग रहे होते हैं आजकल. तो ये LED बल्ब जो हैं, ये इसके अंदर बिजली बहुत कम यूज़ की जाती है और इसका प्रिंसिपल डिफरेंट है. बट अर्लियर जो बिजली के बल्ब होते थे उसमें तार लगी होती थी. वो तार जो होती थी जो आपको नज़र आती थी, वो टंगस्टन फिलामेंट थी, या टंगस्टन की वायर होती थी. उसमें से जब बिजली व्हेन इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड टू पास थ्रू इट यूज्ड टू ऑफर, द टंगस्टन यूज्ड टू ऑफर लॉट ऑफ रेजिस्टेंस टू द फिलामेंट. जो जितने भी उसमें फिलामेंट था, वो बिजली को बहुत रेजिस्टेंस ऑफर करता था. इतनी रेजिस्टेंस के पहले वो सोख होता था, उसके बाद वो ग्लो कर जाता था और वो रोशनी देना शुरू कर देता है. सो दिस इज दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन इज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस. व्हेन इट गोज थ्रू इट,
द रेजिस्टेंस मेक्स द फिलामेंट वेरी हॉट। तो रेजिस्टेंस उसकी जो मुज़ाहमत होती है करंट को, जो उसके चार्जेस को मिलती है वो बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से जो है ना ये टंगस्टन जो है ना वो रोशनी लेना शुरू कर देता है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आई वांट टू टेल यू, प्लीज़ रिमेंबर दैट द एग्जाम सिलेबस इज फ्रॉम चैप्टर 6 to 9, 6th chapter, 7th chapter, 8th chapter, 9th chapter. 4 chapters are included in the exams that you will appear. The chapter 6 is regarding structure of atom. Chapter 7th is physical and chemical changes. Chapter 8 is about transmission of heat, and chapter 9 is dispersion of light. So please go through these 4 chapters. What I am doing now is ये syllabus से बाहर है, ये next term के लिए पढ़ रहे हैं. I'll go over the main points again. Please make notes of that and try to remember. Number 1, what are the measuring instruments? Since electricity cannot be seen when it passes through a wire, therefore the scientists have made different measuring instruments. For current, you use an instrument, or you use a device which is known as ammeter. An ammeter is always connected in series to a circuit, and ammeter has a very low resistance. It has a very low resistance. And what is ammeter? It is a device to measure current in a circuit. Then the next instrument that is used in electricity is voltmeter. This it allows you to measure how much voltage is there in a certain circuit, and it is used in parallel with this circuit, and it has a very high resistance. So what is voltmeter? वोल्टमीटर क्या होता है? एक डिवाइस टू मेजर वोल्ट. नंबर 2, कनेक्शन सर्किट पे कैसे लगाते हैं? पैरेलल में लगाते हैं. नंबर 3, इसकी रेजिस्टेंस बड़ी हाई होती है. देन द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड इज अ मल्टीमीटर. एक मल्टीमीटर एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि वोल्टेज भी, करंट भी और ओम्स को भी मेजर कर सकता है. ओम्स क्या होती है? ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, and it can measure all 3. So normally we call it avometer. Now we come to the next topic, 11.4.1, which is regarding electrical power. What is electrical power? Electrical power is the rate at which electrical energy is converted into other forms of energy. और इसका यूनिट क्या है? watt इसका यूनिट है. But watt is a small unit, so we use a bigger unit which is known as kilowatt hour. And what is kilowatt hour? If the rate of using electricity is 1000 watts per hour, then it is known as 1 kilowatt hour, and it is known as 1 unit. So 1 kilowatt hour is 1000 watts. 1000 वाट्स 1 घंटा इस्तेमाल होता है तो 1 यूनिट बनता है. फिर देयर इज़ अ फिश विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक ईल. वो केमिकल एक्शन से जो है ना 6000 वोल्ट तक बिजली पैदा कर लेती है, और वो जो 6000 वोल्ट है उसको यूज़ करती है अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए. सिमिलरली जो बल्ब बिजली के होते थे जो पहले इस्तेमाल, जिसमें आपको तार नज़र आती थी कनेक्ट की हुई उसके दोनों टर्मिनल्स के साथ, दैट फिलामेंट यूज्ड टू बी ऑफ टंगस्टन, एंड दैट टंगस्टन यूज्ड टू गेट हीटेड अप व्हेन इलेक्ट्रिक करंट यूज्ड to flow from it, and such was the high resistance that it would start glowing. The next thing to you please remember is that the exams will be from chapter 6, 7th, 8th, 9th, and these chapters concern structure of atom, physical chemical changes, transmission of heat, and dispersion. Please go over them, and if you have any difficulty, please feel free to talk to me on this number 0336 547 3312. Wish you the best of luck. Thank you.